When I was brought into prison, a jail official told me not to worry because I'd get bailed out in 15 days. I shuddered at the prospect of having to spend 2 weeks behind bars and wondered how I'd survive, Junaid Hafeez told someone who visited him in prison soon after his arrest. That was 10 years ago. He is a prisoner nobody is interested in. He was charged under blasphemy laws in 2013 in the most unfortunate circumstances, because he brought a fresh perspective to teaching his students in Multan's Bahauddin Zakaria University and earned the wrath of a coterie of teachers, adherents of right-wing ideology. His legal defense team maintains to this day that the so-called evidence against him was fabricated and patently flimsy, but in the environment we have in the Islamic Republic of Pakistan, at least lower court judges are known to err on the side of caution, i.e., decide less on the merit of the case and more on the grounds of self-preservation. You'd ask, why do they not walk away from a job as demanding as deciding about someone's liberty, life and death as a matter of routine if they don't have what it takes to be able to face up to any consequences of upholding the truth? But let's not kid ourselves. How bleak life must be for a brilliant young man who returned to the country to bring light to university students. We aren't made of the stuff where principles such as transparent dispensation of justice is the most overriding concern of our robed interpreters of the law, no more than it is of the parliamentarians or defense personnel, or anyone else in society for that matter. Perks, privileges and position in society is what matters, and the fastest route to riches or at least financial stability. Such cases are seen as dynamite. At least privately, some such officers of the law cite examples such as what happened to Junaid Hafeez's lawyer. Rashid Rehman, the Multan-based human rights lawyer who took up the case, was warned in open court not to take up the brief. He expressed the fear he may not be able to make the next hearing. However, the brave man did not relent and continued to represent Mr. Hafeez. He was shot dead in his office in 2014. Nobody has been arrested or faced justice for that murder. The trial saw some half a dozen presiding judges come and go. Finally, 6 years later, in 2019, he was sentenced to death by a trial court inside Multan jail. A member of the defense team, who described the verdict as utterly flawed, was optimistic that even in the present environment it would be vacated on appeal. All that needs to happen is for a date to be set for it to be heard on merit. Using my very humble, and in the event useless, contacts, I tried to have a message conveyed to the senior-most judicial figure of the country, pleading that something could be done so the appeal is heard but strictly on merit. Rather foolishly, I hoped that someone who was instrumental in sending 2 sitting prime ministers packing and had acquired a reputation for trying to clear the long backlog of pending cases before the highest court, would see to it that justice was not denied by virtue of being delayed for a young man, an educated young man, whose liberty was taken from him, and whose life now hangs in the balance on pretty dodgy grounds. But pity me, even the nation possibly, nothing happened. Junaid Hafeez remains a prisoner. The appeal has not gone very far. It breaks my heart to imagine how bleak life must be for a brilliant young man who returned to the country to bring light to university students. He elicited so much fear and hate among his obscurantist and, as my own experience with such a lot tells me, utterly incompetent peers that they not only got him kicked out of a job, but also of any semblance of a normal life. There are endless travesties. Nakabullah Masud, the unarmed young Waziristan man, picked up and killed by the Karachi police in cold blood. His killers have just been given a free pass by the trial court. Lawyers representing his family say they'll appeal the acquittal as it flies in the face of a mountain of evidence. Nakabullah's outrageous and evil murder led to the creation of the Pakhtun Tahaffuz movement, one of whose leaders, an elected MNA from a Waziristan constituency, Ali Wazir, remains in prison. He lost 17 close family members to the TTP's murderous violence. His crime? Calling out the follies of the security setup in formulating policies based on the now absolutely discredited good-bad Taliban argument. No superior court has stepped in to stop the nonsense and said the man is entitled to his freedom. He is released in one case,
but before he can step out of prison, is entangled in another. These are all demonstrably mollified prosecutions. The powers that be actually wish him to apologize for publicly sharing his honest thoughts. A less ham-fisted society may even have considered him for an advisory role in policy formulation, as he has experience few have, tragic as that has been. But no. The honorable black robes, whether knowingly or unwittingly, have been denying him his freedom. Had he been a politician seen as more mainstream and not fringe, would a different outcome have been possible? Fundamental rights to me are inalienable. Nobody's freedom should be curtailed on account of their views. But this principle needs to be applied across the board. Outrage and uproar can't be selective. Nobody needs to be treated or made to feel like they are children of a lesser god. It can't be simpler. The writer is a former editor of Dawn. Published in Dawn, January 29, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. जब मुझे जेल लाया गया तो जेल के एक अफसर ने मुझसे कहा कि फिक्र न करो क्योंकि मुझे 15 दिनों में जमानत मिल जाएगी। जुनैद हफीज ने गिरफ्तारी के फौरन बाद जेल में उनसे मिलने आने वाले एक शख्स को बताया कि मैं 2 हफ्ते जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के इम्कान से कांप गया था और सोच रहा था कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा। ये 10 साल पहले की बात है। वो एक ऐसा कैदी है जिसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। इन पर 2013 में तौहीन मजहब के कवानीन के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी क्योंकि उन्होंने मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अपने तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए एक नया नुक्ता नज़र पेश किया था और दाएं बाजू के नज़रियात के पैरोकार असातिज़ा के एक गिरोह के गज़ब का सामना करना पड़ा था। उनकी कानूनी दिफा की टीम आज तक इस बात पर कायम है कि उनके खिलाफ नाम निहाद सबूत मनगढ़ंत और वाज़े तौर पर कमज़ोर थे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे पास जो माहौल है इसमें कम अज कम निचली अदालतों के जज एहतियात के साथ गलती करने के लिए जाने जाते हैं, यानी मुकदमे की मेरिट पर कम और खुद को महफूज रखने की बुनियाद पर ज्यादा फैसला करते हैं। अब पूछेंगे कि अगर उनके पास सच्चाई की पासदारी के किसी भी नताइज का सामना करने के काबिल होने के काबिल नहीं है तो वो किसी की आज़ादी, जिंदगी और मौत के बारे में फैसला करने जैसे मुतालबे जैसे काम से दूर क्यों नहीं चले जाते। लेकिन हम खुद को बच्चा ना बनाएं। एक ज़हीन नौजवान के लिए जिंदगी कितनी तारीख होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए रोशनी लाने के लिए मुल्क वापस आया था। हम ऐसी चीज़ों से नहीं बने हैं जहां इंसाफ की शफाफ फराहमी जैसे उसूल कानून के हमारे लूटे हुए तर्जुमानों के लिए सबसे ज्यादा तशवीश का बाइस हैं। इससे ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस दिफाई अहलकारों और मुआशरे में किसी और के बारे में नहीं। मुरात और मुआशरे में मकाम अहम है और दौलत कम अज कम माली इस्तेहकाम के लिए तेज तरीन रास्ता है। इस तरह के मामलात को डायनामाइट के तौर पर देखा जाता है। कम अज कम निजी तौर पर कानून के कुछ ऐसे अफसरान मिसालें देते हैं जैसे जुनैद हफीज के वकील के साथ किया हुआ। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हुकूक के वकील राशिद रहमान, जिन्होंने इस केस की समाअत की, को खुली अदालत में मुतनब्बे किया गया था कि वो बरीफ पर समाअत न करे। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि शायद वो अगली समाअत न कर सकी। ताहम बहादुर शख्स बाज नहीं आया और मिस्टर हफीज की नुमाइंदगी जारी रखी। उन्हें 2014 में उनके दफ्तर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस कत्ल के इल्जाम में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही इंसाफ का सामना करना पड़ा। मुकदमे की समाअत में तकरीबन निस्फ दर्जन प्रिजाइडिंग जज आए और चले गए। बिलाखिर 6 साल बाद 2019 में उन्हें मुल्तान जेल के अंदर ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। दिफाई टीम के एक रुकन, जिन्होंने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर नाकिस करार दिया, तो उम्मीद थे कि मौजूदा माहौल में भी अपील पर उसे खाली कर दिया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि मेरिट की बुनियाद पर उसकी समाअत के लिए एक तारीख मुकर्रर की जाए। मैंने अपने इंतहाई आजिजाना और बेफायदा राबतों का इस्तेमाल करते हुए मुल्क की आला तरीन अदालती शख्सियत तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की और दरख्वास्त की कि कुछ किया जा सकता है ताकि अपील की समाअत हो, लेकिन सख्ती से मेरिट की बुनियाद पर।
बल्कि अहमकाना तौर पर मुझे उम्मीद थी कि जिस शख्स ने 2 मौजूदा वज़राए आज़म को पैकिंग में भेजने में अहम किरदार अदा किया था और जिसने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के तवील इल्तिवा को हल करने की कोशिश में शोहरत हासिल की थी, वो ये देखेगा कि एक नौजवान के लिए ताख़ीर की वजह से इंसाफ से इनकार न किया जाए। एक तालीम याफ्ता नौजवान जिसकी आज़ादी इससे छीन ली गई थी और जिसकी ज़िंदगी अब इंतहाई गुमराहकुन बुनियादों पर इल्तिवा का शिकार है। लेकिन मुझ पर रहम करो, यहाँ तक कि कौम पर भी कुछ नहीं हुआ। जुनैद हफीज अब भी कैदी हैं। अपील ज्यादा दूर नहीं गई है। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि एक ज़हीन नौजवान की जिंदगी कितनी तारीख होगी जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को रोशनी देने के लिए मुल्क वापस आया था। उन्होंने अपने जिद्दी लोगों में इतना खौफ और नफरत पैदा की और जैसा कि मेरा अपना तजर्बा मुझे बताता है कि वो बिल्कुल नाअहल साथी थे कि उन्होंने न सिर्फ उन्हें नौकरी से निकाल दिया बल्कि एक आम जिंदगी की किसी भी झलक से भी महरूम कर दिया। ना खत्म होने वाले मजाक हैं। नकीबुल्लाह महसूद, जो वजीरिस्तान का 69 नौजवान था, को कराची पुलिस ने उठाकर कत्ल कर दिया। इनके कातलों को ट्रायल कोर्ट ने अभी फरीपास दिया है। उनके अहल खाना की नुमाइंदगी करने वाले वकला का कहना है कि वो बरियत के खिलाफ अपील करेंगे क्योंकि ये सबूतों के पहाड़ के सामने उड़ रहा है। नकीबुल्लाह के बहीमाना कत्ल के नतीजे में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वजूद में आई, जिसके एक रहनुमा वजीरिस्तान के हल्के से मुंतखब MNA अली वजीर अब भी जेल में हैं। उन्होंने TTP के कातिलाना तशद्दुद में अपने 17 करीबी रिश्तेदारों को खो दिया। इसका जुर्म तालिबान की जानिब से अब मुकम्मल तौर पर बदनाम किए जाने वाले अच्छे और बुरे दलाइल पर मबनी पॉलिसियां तश्कील देने में सिक्योरिटी सीट अप की हमाकतों को उजागर किया। किसी भी आला अदालत ने इस बकवास को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया और कहा कि आदमी अपनी आज़ादी का हकदार है। इसे एक केस में रहा कर दिया जाता है, लेकिन जेल से बाहर निकलने से पहले ही वो दूसरे मामले में फंस जाता है। ये सब वाज़े तौर पर बदनीयती पर मबनी मुकदमात हैं। असल में ताकतें चाहती हैं कि वो अपने ईमानदाराना ख्यालात को अवामी तौर पर शेयर करने के लिए मुआफ़ी मांगे। हो सकता है कि एक कम जिम्मेदार मुआशरे ने उन्हें पॉलिसी साजी में मशावरती किरदार के तौर पर भी देखा हो, जैसा कि उनके पास बहुत कम तजर्बा है, जैसा कि ऐसा अफसोसनाक रहा है। लेकिन नहीं, इज्जत में अब काले लिबास, चाहे जानबूझकर हों या नादानिस्ता तौर पर, उन्हें उनकी आज़ादी से महरूम कर रहे हैं। अगर वो एक ऐसे सियासतदां होते जो ज्यादा ही मेन स्ट्रीम के तौर पर देखे जाते और हद बंदी के तौर पर नहीं देखे जाते, तो क्या इसका कोई मुख्तलिफ नतीजा निकल सकता था? मेरे लिए बुनियादी हुकूक नाकाबिल तनसीख हैं। किसी की भी आज़ादी को उनके ख्यालात की वजह से महदूद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस उसूल को पूरे बोर्ड में लागू करने की जरूरत है। गुस्सा और हंगामा चुनिंदा नहीं हो सकता। किसी के साथ सलूक करने या ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि वो किसी छोटे खुदा के बच्चे हैं। ये आसान नहीं हो सकता। मजमून निगारदान के साबिक एडिटर हैं। अखज़ शदा बतारीख 29 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.